Dear children, heartiest welcome in this English class. How are you? Hope that all of you are well and safe at your home. Dear children, today we will do some important unseen comprehension passages and solve the questions that follow. The learning objective is that after doing these unseen passages, you will be able to answer questions orally and in writing on a variety of texts. You will also able to ask and respond to questions based on texts, that is from books or from other resources and out of curiosity. Let's start. Read the following passage and answer the questions that follow. Dear children, first we read this passage and also understand in Hindi. Onam is the most popular festival of Kerala. ओणम केरल का सबसे लोकप्रिय त्योहार है. इट इज़ ए हार्वेस्ट फेस्टिवल. यह फसल का त्योहार है. इट इज़ सेड दैट देयर वॉज वंस अ ग्रेट डेमन किंग कॉल्ड महाबली इन केरला. कहा जाता है केरल में महाबली नाम का एक महान राक्षस राजा था. द गॉड्स वर वरीड दैट ही वुड बिकम टू पावरफुल, सो दे आस्क्ड लॉर्ड विष्णु फॉर हेल्प. देवता चिंतित थे कि वह बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी. विष्णु इन द फॉर्म ऑफ ए ड्वार्फ कॉल्ड वामना कैरिड आउट ए प्लॉट बाय विच महाबली लेफ्ट द अर्थ. भगवान विष्णु ने बौने का रूप धारण किया, जिसे वामन कहते हैं, एक साजिश को अंजाम दिया जिससे महाबली ने पृथ्वी छोड़ दी. द गॉड्स वर रिलीव्ड. देवताओं को राहत मिली. When Mahabali returned to his people, a festival was celebrated to welcome his visit. जब महाबली अपने लोगों के पास लौटे तो उनकी यात्रा के स्वागत के लिए एक उत्सव मनाया गया. People clean and decorate their houses on this day. इस दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई और सजावट करते हैं. I hope you understand this passage. Let's solve the questions that follow. Question number 1 is, which is the most popular festival of Kerala? The answer of this question is, Onam is the most popular festival of Kerala. Now second question, what is the name of great demon king? The answer of this question is, Mahabali is the name of great demon king. Now third question of this passage is, what is the importance of Onam festival? The answer of this question is, Onam is celebrated to welcome King Mahabali when he returned to his people. Now fourth question, how do people of Kerala celebrate this festival? The answer of this question is, people of Kerala clean and decorate their houses on this day. Now last question of this passage is, add suffix full to the words number 1 color and number 2 beauty. The answer of this question is, after adding suffix full in color it becomes colorful and in beauty it becomes beautiful. Dear children, let's go to another passage. Read the following passage and answer the questions that follow. Dear children, first we read this passage and also understand in Hindi. Thereafter, we answer the questions that follow. The best thing going to school is learning to read. स्कूल जाकर पढ़ना सीखना सबसे अच्छी बात है. Books are great friends. किताबें बहुत अच्छी दोस्त होती हैं. They can help you to learn about anything you want to know. आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं उसके बारे में जानने में वे आपकी मदद कर सकती हैं. They can go anywhere with you. वे आपके साथ कहीं भी जा सकती हैं. You can read animals, far away places, people and anything else. आप जानवरों, दूर के स्थानों, लोगों और कुछ भी पढ़ सकते हैं. Books are written by people called authors. पुस्तकें लेखक कहे जाने वाले लोगों द्वारा लिखी जाती हैं. Authors think of things they want to write about.
लेखक उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके बारे में वे लिखना चाहते हैं। दे मेक अ प्लान फॉर ए बुक एंड स्टार्ट टू राइट। वे एक किताब की योजना बनाते हैं और लिखना शुरू करते हैं। समटाइम्स ऑथर्स लाइक टू राइट फन बुक्स दैट मेक अस लाफ। कभी कभी ऐसी मज़ेदार किताबें लिखना पसंद करते हैं जो हमें हंसाएं। सम ऑथर्स राइट बुक्स दैट गिव अस इंफॉर्मेशन एंड टीच अस। कुछ लेखक ऐसी किताबें लिखते हैं जो हमें जानकारी देती हैं और हमें सिखाती हैं। ऑथर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, दे हेल्प अस टू लर्न। लेखक बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, वे हमें सीखने में मदद करते हैं। फाइंड अ गुड बुक टू रीड एंड रीड इट एवरी डे। हर दिन पढ़ने और पढ़ने के लिए एक अच्छी किताब खोजें। यू विल enjoy स्पेंडिंग टाइम अ गुड बुक। आपको एक अच्छी किताब में समय बिताने में मज़ा आएगा। डियर चिल्ड्रन, आई होप you understand this passage. Now, let's answer the questions that follow. The first question of this passage is, how are books our great friends? The answer of this question is, books can help you to learn about anything you want to know, and they can go anywhere with you. Now, second question, who are authors? The answer of this question is, those people who write books are authors. Now, third question. What are authors like to write? The answer of this question is, authors like to write fun books that make us laugh. Some authors write books that give us information and teach us. Now, fourth question. Why are authors very important? The answer of this question is, authors are very important people because they help us to learn. Dear children, I hope you understand above these unseen passages. Dear children, there is a worksheet along with this video. Kindly solve the questions given in the worksheet after seeing this video so that you can make more understanding about unseen passages. Thank you. Be happy and safe.